Hello, you're watching Hornbill TV's Prime Time, and now the headlines. Israeli forces killed at least 8 Palestinians in raids on Tuesday on a refugee camp near the city of Tulkarm in the Israeli-occupied West Bank, Palestinian officials said. At least 5 soldiers were killed and 8 injured in an accident that occurred in Jammu and Kashmir's Poonch sector on Tuesday. BJP MP Ramveer Singh Biduri has announced that the party's manifesto, the Sankalp Patra, for the upcoming Delhi Assembly elections has been finalized and will soon be unveiled. The air quality index in Delhi on Wednesday morning was in the very poor category, an improvement from severe category the day earlier, according to the Central Pollution Control Board. Now the news in detail. Israeli forces killed at least 8 Palestinians in raids on Tuesday on a refugee camp near the city of Tulkarm in the Israeli-occupied West Bank, Palestinian and Israeli officials said. Khwala Abdo, a 53-year-old woman, was killed as of a result by shelling by Israeli forces at dawn, while Fatih Saeed Odeh Salem, an 18-year-old man, died after being shot in the abdomen and chest, the Palestinian Health Ministry said. Another Palestinian woman died in the afternoon due to sustained injuries from the attack. Later on Tuesday, the Health Ministry updated its death toll to 8 after a new round of shelling in Tulkarm by Israeli forces. Hamas's armed wing, Al-Qassam Brigade, said in a statement that 2 of its members were killed by Israeli forces in Tulkarm. The Israeli military said earlier it killed 1 Palestinian in a counter-terrorism operation in Tulkarm, while its forces arrested 18 other wanted individuals and confiscated dozens of weapons. The Israeli army said early on Wednesday one of its commanders was moderately injured after his vehicle was hit by an explosive device during the operation in the area of Tulkarm. Late on Tuesday, the military also said aircraft had struck armed militants in the Nur Shams refugee camp. Hundreds of Palestinians and dozens of Israelis have been killed in the West Bank since October 7, 2023 attack by Hamas militants on southern Israel triggered the war in Gaza and a wider conflict on several fronts. The official Palestinian news agency WAFA said Israeli forces prevented ambulance crews from reaching Salem by opening fire on them. Bulldozers also demolished infrastructure in Tulkarm camp, including homes, shops, parts of the walls of Al Salem Mosque, which they barricaded off, and part of the camp's water network, it said. Moving on, at least 5 soldiers were killed and 8 injured in an accident that occurred in Jammu and Kashmir's Poonch sector on Tuesday. The accident happened during their operational duty. The mishap happened when a vehicle carrying them skidded off the road and rolled down into a gorge in Poonch. The accident occurred in the Gharwa area when an army vehicle was heading to Banoi. The vehicle plunged into a deep gorge approximately 300 to 350 feet deep, resulting in serious injuries to 8 to 9 Jawans. All ranks of the White Knight Corps extended their deepest condolences on the tragic loss of 5 brave soldiers in a vehicle accident during the operational duty in the Poonch sector.
Spokesperson further added that the cause of the accident being ascertained. As per preliminary investigations, possibly the driver lost control at the turn of the road. BJP MP Ramveer Singh Biduri has announced that the party's manifesto, Sankalp Patra, for the upcoming Delhi Assembly elections has been finalized and will soon be unveiled. In a post on X, Biduri added that the manifesto would represent the aspirations of the people. Meanwhile, the Bharatiya Janata Party held a brainstorming session with the RSS at the BJP headquarters extension office in Delhi on Tuesday. The leaders discussed ways to improve coordination between the BJP and RSS during the elections. Building on victory strategies used in Haryana and Maharashtra, discussions focused on enhancing the BJP-RSS coordination for the polls. National General Secretary Organization BL Santosh, Delhi BJP State General Secretary Pawan Rana, State President Virendra Sachdeva, State in charge Bhaijayant Panda and several other officials attended the meeting. Assembly elections in Delhi are due in February and the Arvind Kejriwal-led AAP is pushing for a third consecutive term. Kejriwal stepped down as Chief Minister after being granted bail in a corruption case. He has stated that he would return to the top office only after the people's verdict in this election. Newly inducted Minister in Assam Cabinet Kaushik Rai performed a Bhumi Pujan for a 100-bedded state-of-the-art hospital in his own constituency, Lakhipur of Kachar district, on Tuesday evening. The hospital, said to be completed within 2 years, is being constructed with a grant of 127 crore. It will feature 3 operation theatres, a modern ICU, a mother and child care unit, and a burn unit, as revealed by Kaushik Rai during his interaction with the media. He emphasized that the hospital will serve not only the residents of Lakhipur but also the entire Kachar district. Minister Kaushik Rai was joined at the event by Kachar District Commissioner Mridul Yadav and Kachar District BJP President Bimalendu Roy. লক্ষীপুৰৰ ৰাইজৰ কাৰণে অকল নহয়, কাছাৰৰ ৰাইজৰ কাৰণে এটা আনন্দৰ দিন যে আমি ইয়াতে ৱৰ্ল্ড বেংক প্ৰজেক্টৰ অধীনত আমি 127 কোটি টকা বেৰে লক্ষীপুৰ 100-বেডেড ডিস্ট্ৰিক্ট হস্পিটেলৰ আমি ভূমি পূজন অনুষ্ঠান কৰিছো। লক্ষীপুৰৰ ৰাইজৰ ফালৰ পৰা ৰাইজৰ ফালৰ পৰা মই মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ জনাওঁ যে তেওঁ এনে ডাঙৰ এটা পদক্ষেপ, ডাঙৰ এটা উপহাৰ আমাক এইটো দিছে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা যেতিয়া 1 মাৰ্চ 2024 চনত আহিছিলে, তেওঁ ভাৰ্চুৱেল এইটো আধাৰশিলা ৰাখিছিলে, ফাউণ্ডেশ্যন দিছিলে আৰু আজি আমি এইটো ফাউণ্ডেশ্যন ভূমি পূজন আমি কৰিব পাৰিছো। ইয়াতে যিমান ফেচিলিটি আছে, মডাৰ্ণ হস্পিটেলত যিমান ফেচিলিটি থাকিব লাগে সব গোটেই ফেচিলিটি ইয়াত থাকিব। 2 বছৰৰ ভিতৰত আমি এই হস্পিটেল কমপ্লিট কৰি ৰাইজৰ কাৰণে আমি মুকলি কৰি দিম, যাতে ইয়াৰ পৰা গোটেই কাছাৰৰ ৰাইজ যাতে ভাল স্বাস্থ্য পৰিষেবা গ্ৰহণ কৰিব পাৰে। কিচিছৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বেজমেণ্ট প্লাছ G+6 বিল্ডিং এইটো ইয়াত হ'ব। 1,86,000 স্কুৱাৰ ফুটৰ এই বিল্ডিং হ'ব, যাৰ ডায়ালিচিছ থাকিব, বাৰ্ণ ইউনিট থাকিব, 3খন OT থাকিব, মাদাৰ এণ্ড চাইল্ড কেয়াৰ ইউনিট থাকিব আৰু যিমান মডাৰ্ণ যে ICU থাকিব, মডাৰ্ণ যিবিলাক ফেচিলিটি লাগে, ট্ৰমা চেণ্টাৰ থাকিব, সব ফেচিলিটি হস্পিটেলত থাকিব। 127 কোটি টকাৰ মাজত 20 কোটি টকা আমাৰ ইকুইপমেণ্টৰ কাৰণে এতিয়া হোৱা নাই টেণ্ডাৰ, 107 কোটি টকাৰ টেণ্ডাৰ হৈছে, যিটোৰ কাম আমি এতিয়া আজিৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিলো। Delhi Chief Minister Atishi has strongly countered a public notice issued by the Delhi Women and Child Development Department, which stated that the Mahila Saman Yojana and a scheme for the free health treatment for senior citizens has not been officially notified. Atishi dismissed the notice as misleading and accused the BJP of pressuring officers to publish it. आज अखबारों में जारी हुए हैं वो पूरी तरह से गलत हैं, झूठे हैं और कुछ अफसरों पर भारतीय जनता पार्टी ने दबाव बनाकर
ये गलत सूचना अखबार में छपवाई है। इन अफसरों के खिलाफ एडमिनिस्ट्रेटिव कार्रवाई तो होगी ही, इन अफसरों ने जो ये गलत सूचना अखबार में छापी है, इनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई भी की जाएगी। आज अखबार में ये सूचना निकाली गई कि महिला सम्मान ऐसी कोई योजना नहीं है, जबकि दिल्ली सरकार का कैबिनेट डिसीजन है, दिल्ली सरकार का ये नोटिफिकेशन है इस कैबिनेट डिसीजन का। ये नोटिफिकेशन पब्लिक डोमेन में है कि ये स्कीम है 1000 रुपए की, ये नोटिफाई हो चुकी है। उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने कुछ अफसरों पे दबाव बनाया है। उन अफसरों पे सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और उन अफसरों पर पुलिस कार्रवाई भी होगी। दूसरी बात, दिल्ली सरकार ने 1000 रुपए हर महीने देने की स्कीम पास की, लेकिन उसके बाद अरविंद केजरीवाल जी ने आम आदमी पार्टी की तरफ से एक गारंटी दी कि चुनाव जीतने के बाद सिर्फ 1000 रुपए नहीं 2100 रुपए दिए जाएंगे। उसके बाद अरविंद केजरीवाल जी ने यह घोषणा करी कि चुनाव जीतने के बाद जब फिर से सरकार बनेगी तब एक संजीवनी योजना लाई जाएगी, बुजुर्गों को चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो फ्री इलाज देने की। तो ये स्वाभाविक बात है, ये आम आदमी पार्टी की घोषणा है, ये अरविंद केजरीवाल जी की गारंटी है कि सरकार बनने के बाद संजीवनी लाई जाएगी, सरकार बनने के बाद 1000 रुपए को 2100 किया जाएगा। लेकिन इस प्रकार की झूठी खबरें जो भारतीय जनता पार्टी निकलवा रही है, सिर्फ और सिर्फ उनकी बौखलाहट दिखा। The air quality index in Delhi on Wednesday morning was in the very poor category, an improvement from severe category the day earlier, according to the Central Pollution Control Board. At 8 a.m., the AQI was recorded at 333, down from 401 the same time on Tuesday. The stringent measures under the stage IV of the graded response action plan in Delhi were lifted on Tuesday following an improvement in the AQI. The Commission of the Air Quality Management, the central body overseeing air quality in Delhi NCR, issued an official order easing these restrictions. Despite the relaxation, restrictions on BS3 petrol and BS4 diesel vehicles remain under GRAP Stage 3, continuing to impact commuters. The ban on these vehicles was reintroduced on December 16, coinciding with the implementation of the GRAP Stages 3 and 4 amid escalating pollution levels. Earlier in November, GRAP Stage 4 measures were first imposed when pollution reached the severe plus category. These were eased in early December when air quality showed signs of improvement and GRAP Stage 2 measures were reinstated. On Christmas Day, BJP National President and Union Minister J.P. Nadda, accompanied by BJP members of Parliament Mansoori Swaraj and Kamaljit Sehrawat, Delhi BJP President Virendra Sachdeva and party leader Anil Anthony visited the Catholic Bishops' Conference of India headquarters at the Sacred Heart Cathedral in Delhi. The visit was marked by festive cheer and goodwill as the leaders engaged with the Christian community to celebrate the spirit of Christmas. In his address, Union Minister and BJP National President J.P. Nadda extended warm wishes to the nation. Nadda emphasized the importance of unity, harmony and progress in his message, calling for collective growth across all segments of society. पहले तो आप सबके माध्यम से देशवासियों को मेरी क्रिसमस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। और आज मुझे सेक्रेड हार्ट कैथेड्रल में आकर यीशु मसीह जी के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और यहाँ मैंने भगवान से प्रार्थना की कि हम सबको सभी समाज के लोगों को मंगलमय रखे और इसके साथ साथ सद्भाव के साथ देश
सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इस मंत्र को लेकर, प्रधानमंत्री जी के इस मंत्र को लेकर देश आगे बढ़े और संवाद में सद्भावना के साथ साथ सभी विकास के साथ अपने आप को जोड़े, ऐसी हमने प्रार्थना की है। आज के दिन मैं पुनः आप सबके माध्यम से देशवासियों को, सभी भाई बहनों को क्रिसमस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। On Christmas Day, Congress leader T.S. Singh Deo conveyed his warm wishes to the nation, wishing all fellow countrymen a Merry Christmas. The day also marked the 100th birth anniversary of the Bharat Ratna and former Prime Minister Atal Bihari Vajpayee, a leader who continues to be remembered for his contributions to India's development and political ethos. Meanwhile, Singh Deo reflected on Vajpayee's unique leadership qualities and his inclusive approach towards governance. आज का दिन क्रिसमस का भी दिन है। क्रिसमस के त्यौहार की देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथ ही भारत रत्न देश के पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी 100वां जयंती दिवस है, तो उनको भी श्रद्धांजलि और जन्मदिवस के अवसर पर जहां हो, जिस रूप में हो, उनको हमेशा शुभकामनाएं। देश के ऐसे नेता थे जो मेरे लिए विपक्ष के होते हुए भी मान्य थे। उनकी नीतियां, उनके स्वभाव, उनका आचरण, उनका तुलनात्मक खुलापन, इसकी देश को आवश्यकताएं हैं। चाहे जिस पक्ष का नेता हो, ऐसे विचार होने चाहिए जो देश को लेके एक होके चल सके। जो व्यक्ति विपक्ष में होके भी इंदिरा जी के संदर्भ में दुर्गा ऐसी बात कह सकते हो और दृढ़ता से अपने दल की भी हितों की रक्षा के लिए काम कर सकते हो, मैं समझता हूं कि एक अच्छा सम्मिश्रण उनमें एक तर्कशील, चिंतनशील और प्रभावी नेता के थे। A fresh political controversy erupted in Delhi over the Aam Aadmi Party's proposed schemes offering a monthly allowance of Rs 2,100 to women and free medical treatment for senior citizens. BJP MP Yogendra Chandolia has sharply criticized the announcement, dismissing it as a fake scheme and calling for criminal action against AAP MLAs involved in promoting the programs. In response to a notice issued by the Delhi government which outlined these welfare schemes, Chandolia claimed that the schemes were not legitimate. Chandolia, who represents the BJP in the parliament, went a step further, demanding legal action against AAP legislators who are reportedly involved in filling forms for the proposed schemes. जिन जिन माताओं बहनों के फार्म भरवाए हैं उनसे माफी मांगनी चाहिए, उनके जो आधार कार्ड ये लिए उनको वापस देने चाहिए। ये कोई योजना नहीं है। दिल्ली सरकार केवल दिग्भ्रमित कर अगर ये योजना आप लाते तो 10 साल से आप सरकार के अंदर हैं, आप 2015 में क्यों याद नहीं है आपको? और लास्ट टाइम पे जब मैं आऊंगा तब मैं ये दूंगा। अब लोग जान चुके हैं, बार बार काठ की हांडी चढ़ा नहीं करती। समय खत्म हो चुका है। अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली छोड़ के जाना पड़ेगा। ट्वीट करके कह रहे हैं कि बीजेपी के लोग इसको लेकर के केस दर्ज करा के आप किसी को भी जेल भेज सकते हैं। केस दर्ज कराने का काम तो उन्होंने खुद कर लिया। मैं ये कहना चाहता हूं एलजी साहब से, अगर वुमेन एंड चाइल्ड डिपार्टमेंट ये कह रहा है कि हमारी योजना नहीं है, इसका मतलब ये फर्जी योजना है। जहां जहां पर इसके एमएलए कैंप लगा रहे हैं उनको तुरंत अरेस्ट करना चाहिए। और अगर कोई अधिकारी, मैं मानता हूं कि कोई भी अधिकारी, जब डिपार्टमेंट के एचओडी ने कह दिया कि ये पेंशन योजना हमारी नहीं है, तो उसके बाद तो इनके खिलाफ क्रिमिनल केस होना चाहिए। कोई भी एमएलए अगर आतिशी भी कहीं पर कहती हैं कि मैं मुख्यमंत्री के नाते मैं फार्म भरवा रही हूं, उसके खिलाफ भी केस दर्ज होना चाहिए, क्योंकि सरकार में इनका मामला कुछ नहीं है। सरकार के अधिकारी इनकी सुनना बंद कर रहे हैं, क्योंकि ये सरकार के अधिकारियों को धमकाना, प्रताड़ना करना अंशु प्रकाश का लोगों को पता है। और अब ये क्या क्या कर रहे हैं कुछ समय बाद पता लगेगा। ये महिलाओं के साथ इन्होंने इतना बड़ा अपराध किया है कि महिलाएं इस तरह घूम रही हैं कि हमें 2100 मिलेगा।
1000 रुपया भी ये सरकार नहीं देगी। अगर सरकार देगी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार देगी, क्योंकि हमारी 4 राज्यों में सरकार है। मध्य प्रदेश में लाडली योजना, सुभद्रा योजना, राजस्थान की योजना। अगर महिलाओं का कोई हित कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी कर सकते हैं। नरेंद्र मोदी है तो मुमकिन है। मैं दिल्ली की माताओं बहनों से कहना चाहता हूं, इनके झूठे जाल में ना फंसें, अपना समय खराब ना करें। सरकार की योजनाएं जो हैं 10 साल से सरकार चला रहे थे, आखिरी समय में आपको याद आती है। अब लोगों के पानी के बिल लाखों रुपए के भेज रहे हैं, फिर कह रहे हैं मेरी सरकार आएगी तब माफ करूंगा। यह बहुत बड़ा धोखा हिंदुस्तान में ऐसा अनार्किस्ट है, इसको दिल्ली की जनता को रुखसत कर देना चाहिए। दिल्ली के दंगे का आरोपी इसरत जहां को कांग्रेस उम्मीदवार बना सकती है ओखला विधानसभा से, इसको लेकर देखिए, मैं तो कांग्रेस पार्टी हो या आम आदमी पार्टी हो, दोनों एक सिक्के के 2 पहलू हैं। कोई ताहिर हुसैन को कर रहा है, कोई किसी को कर रहा है। यह सारे के सारे कांग्रेस पार्टी का भी दिवालिया लिपट चुका है। मैं लोकसभा का सांसद हूं, मैं देखता हूं कि कांग्रेस का दिवालियापन, उनके राहुल गांधी किस प्रकार से लोकसभा के अंदर क्या बोलना चाहते हैं और क्या बोलते हैं और क्या समझते हैं, किसी को समझ नहीं आता। कांग्रेस पार्टी और ये दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी, इन दोनों पार्टियों को हराकर 100% सत्ता में आएगी। और फिर दिल्ली के लोगों के साथ जो पिछले 10 साल में जो दिल्ली बेहाल हुई है, उसको दिल्ली को ठीक लीक पर लाने का काम भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में करेगा। City of Guwahati is adorned with festive lights. Businesses and shopping malls are luxuriously decorated, adding to the holiday spirit. Various churches in the city are hosting celebrations, including performances of the Nativity of Lord Jesus Christ, Bible teachings, and other activities. Different churches in and around the city are marking the festival with great pomp and gaiety. Let's have a look at how the people of Guwahati are celebrating the festival of Christmas this year. The Manabindra complex in Diswood turned into a hive of activity early Tuesday as hundreds of Congress workers, supporters and leaders gathered to participate in the Ambedkar Sam organized by the Assam Pradesh Congress Committee. The rally was called in response to Union Home Minister Amit Shah's contentious remarks about Dr. B.R. Ambedkar during the recently concluded winter session of Parliament. Congress claims that the rally aims to reinforce the significance of Ambedkar's contributions to Indian democracy and society. This rally is about Baba Sahib Ambedkar. Similar rallies will be held across the state. Today's program begins with a meeting to discuss Baba Sahib's legacy, followed by the Saman Yatra under the leadership of Gaurav Gogoi. MP Gaurav Gogoi, while speaking to the media, said, "We all know since the day the Indian Constitution was adopted, the Indian flag was adopted as our national flag. From that day onwards, the BJP and the RSS disowned the Indian Constitution, disowned the Indian flag." On the occasion of the 100th birth anniversary of former Prime Minister Atal Bihari Vajpayee, Defence Minister Rajnath Singh paid glowing tribute to the visionary leader, calling him a great thinker of Indian politics and a true son of Mother India. The celebrations, which were being held across the country, highlighted the lasting legacy of Vajpayee, who served as India's 10th Prime Minister and became a symbol of statesmanship, diplomacy and national development. In his tribute, Rajnath Singh recalled Vajpayee's unparalleled contributions to Indian politics and governance. In his tribute, Rajnath Singh recalled Vajpayee's unparalleled contributions to Indian politics and governance. And before we end the bulletin, to all the Hornbill TV viewers, a very Merry Christmas to all of you. Goodbye.